Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Today I am back with another video where we will be coating salt with alum powder. First grind the alum thoroughly and turn it into a powder. While you are grinding the alum, make sure to subscribe to the channel and press the bell icon so you can stay updated with my upcoming videos. And if you are interested in purchasing my hand painted articles, feel free to DM me on Instagram or Facebook. सॉल्ट के पीसेस इतने ले लें कि जितने आपके प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी हों। अब शावर की मदद से हल्के से पानी को सॉल्ट पे स्प्रिंकल करके सॉल्ट को किसी चम्मच से या हाथों से उलट पलट कर लें ताकि मॉइस्चर सारे सॉल्ट पे लग जाए। Take enough pieces of salt for your project. Now using a shower, lightly sprinkle water over the salt and mix it with using a spoon or your hands to ensure that the moisture is evenly distributed on all the salt pieces. अब जो एलम पाउडर बनाया था उसको सॉल्ट पे छिड़क के एक बार फिर सॉल्ट को उलट पलट कर लें और साइड पे रख दें। नाउ स्प्रिंकल द एलम पाउडर दैट यू प्रिपेयर्ड ऑन टू द सॉल्ट एंड मिक्स इट with the salt once again to coat it evenly. After that, set it aside. आज का इफ़ेक्ट मैं शिफॉन पे ले रहा हूँ जिसे जॉर्जेट भी बोलते हैं। शिफॉन को शावर की मदद से वेट कर लें और इस पे कोई सा भी कलर अप्लाई कर दें जो आपके प्रोजेक्ट की कलर स्कीम के मुताबिक हो। Today's effect is being done on chiffon, which is also known as georgette. Wet the chiffon using a shower and then apply any color of your choice that matches the color scheme of your project. अब एलम कोटेड सॉल्ट को शिफॉन पे इक्वली स्प्रिंकल कर दें और जहां एलम कोटेड सॉल्ट नहीं पहुंचा वहां भी एलम कोटेड सॉल्ट के पीसेस रख दें। नाउ इवनली स्प्रिंकल द एलम कोटेड सॉल्ट ऑन द शिफॉन वेयर द एलम कोटेड सॉल्ट हैजंट रीच्ड प्लेस द पीसेस ऑफ एलम कोटेड सॉल्ट इन दोज एरियाज एज वेल। सॉल्ट स्प्रिंकल करने के बाद हमें काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। देखते हैं कितनी देर के बाद एलम कोटेड सॉल्ट का इफ़ेक्ट आता है। आफ्टर स्प्रिंकलिंग द एलम कोटेड सॉल्ट वी विल नीड टू वेट फॉर अ वाइल। लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द एलम कोटेड सॉल्ट इफ़ेक्ट टू शो। तकरीबन 2 घंटों के बाद सॉल्ट का इफ़ेक्ट काफ़ी हद तक आ चुका है, लेकिन शिफॉन अभी तक गीली है और जब तक शिफॉन ड्राई नहीं हो जाती तब तक एलम कोटेड सॉल्ट का इफ़ेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। After about 2 hours, the salt effect has appeared to some extent, but the chiffon is still wet. The alum coated salt effect will not be complete until the chiffon is fully dry. शिफॉन मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुकी है। अब एलम कोटेड सॉल्ट को शिफॉन से उठाकर जार में रख लेंगे और शिफॉन को फ्रेम से एहतियात के साथ उतार लेंगे। द शिफॉन इज़ कम्प्लीटली ड्राई। We will carefully lift the alum coated salt from the chiffon and place it in a jar. Then we will gently remove the chiffon from the frame. आयरन फिक्स्ड सिल्क पेंट्स इस्तेमाल करने की वजह से शिफॉन को आयरन करना होगा, इसलिए दोनों तरफ से अच्छी तरह शिफॉन को आयरन कर लें। सिंस वी आर यूजिंग आयरन फिक्स्ड सिल्क पेंट्स वी नीड टू आयरन द शिफॉन। मेक श्योर टू आयरन बोथ साइड्स ऑफ द शिफॉन थॉरली। आयरन हो जाए तो टैप वाटर में शिफॉन को 5 मिनट्स के लिए डिप कर दें ताकि सॉल्ट और एलम शिफॉन से वॉश आउट हो जाए। धोने के बाद वायर पे ड्राई होने के लिए लटका दें। सिंस वी आर यूजिंग आयरन फिक्स्ड सिल्क पेंट्स इट्स नेसेसरी टू आयरन द शिफॉन। बी केयरफुल टू आयरन बोथ साइड्स थॉरली।
शिफॉन ड्राई हो जाए तो एक बार फिर से आयरन करना ज़रूरी है ताकि शिफॉन के तमाम रिंकल्स निकल जाएं। Once the chiffon is dry, it's important to iron it again to remove any remaining wrinkles. शिफॉन वेट होने के बाद काफ़ी श्रिंक हो जाती है, इसलिए इसको आयरन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। वाटर शावर से हल्का सा पानी स्प्रिंकल करके अगर आयरन किया जाए तो शिफॉन बहुत अच्छी तरह आयरन हो जाएगी और रिंकल्स भी निकल जाएंगे। After the chiffon gets wet, it tends to shrink, making it a bit difficult to iron. However, if you lightly sprinkle water using a shower and then iron it, the chiffon will iron very well and the wrinkles will disappear. By comparing all the salt effect videos and the alum coated salt effect so far, you will notice that when only the salt effect is used, the fabric's white or dyed color is easily visible after the salt effect has appeared. As you can see the both effects of salt and alum coated salt, and you have a better idea now what I am trying to say. However, in today's experiment, if you observe carefully, the color of the fabric is not visible at all under the salt and alum effect, which is quite interesting. It's possible that by trying this method on another fabric, you might get the same result as the salt effect. You will let me know about your experience after conducting the experiment and sharing your results. I am working so hard for all of you to keep this channel running, and I am truly grateful for your immense support. Before leaving, please don't forget to like the video and subscribe to the channel if you are visiting for the first time. Take great care of yourself and remember me in your prayers. Allah Nigeban.